अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। सर आई एम ऑडिबल। यस मैम, यू आर ऑडिबल। आज हमारा लिसनिंग का मॉक टेस्ट है। आज इंशाल्लाह हम कंप्लीट लिसनिंग का मॉक टेस्ट करेंगे और फिर हमारा लिसनिंग का जो मॉड्यूल है वो एंड हो जाएगा। मंडे से हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग मॉड्यूल। तो आज आप लोगों की लिसनिंग के रिलेटेड जो भी क्यूरीज होंगी तो आप क्लियर कर सकते हैं। सर स्क्रीन शेयर हो रही है। यस मैम, स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी। Test 2. आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम, आवाज आ रही है। This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to part 1. Part 1. You will hear two friends talking about a guitar group. First, you have some time to look at questions 1 to 6. ये हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेटर का नेम आएगा। उसके बाद हमने लेवल बताना है, प्लेस बतानी है यहाँ पर हमने, और यहाँ पर कोई भी स्ट्रीट से पहले कोई प्लेस का नाम आएगा या स्ट्रीट का। उसके बाद टाइम बताना है कि थर्सडे मॉर्निंग एट यानी किस टाइम पे वो जो काम हुआ था। और यहाँ पर हमने बताना था परफेक्ट, यानी यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज आ सकती है। Now listen carefully and answer questions 1 to 6. Hi, Coleman. How are you? Good, thanks. I wanted to have a chat with you because our friend Josh told me that you've joined a guitar group and it sounds interesting. I'd really like to learn myself. Why don't you come along? I'm sure there's room for another person. Really? So, who runs the classes? He's called a coordinator. His name's Gary Matheson. Let me note that down. Gary... How do you spell his surname? It's Matheson. Right, thanks. He's retired, actually, but he's a really nice guy, and he used to play in a lot of bands. Thanks. So, how long have you been going? About a month now. And could you play anything before you started? I knew a few chords, but that's all. I'm sure everyone will be better than me. That's what I thought too. When I first spoke to Gary on the phone, he said it was a class for beginners, but I was still worried that everyone would be better than me. But we were all equally hopeless. Oh, that's reassuring. So, where do you meet? Well, when I joined the group, they were meeting in Gary's home. But as the group got bigger, he decided to book a room at the college in town.
I prefer going there. I know that place. I used to go to tap dancing classes there when I was at secondary school. I haven't been since, though, and I can't remember what road it's in. Is it Lock Street? It's just beyond there, at the bottom of New Street, near the city roundabout. Yes, of course. The guitar club is on the first floor in room T347. Right. And when do you meet? Is it at the weekend? We meet on Thursdays. It used to be 10:30, and that suited me well. But now we meet at 11. The class that's in there before us asked if they could have the room for another 30 minutes. Oh, I see. Well, I'd love to come, but I don't have a guitar. Well, you can always buy a second-hand one. There's a website called The Perfect Instrument that sells all kinds of guitars, violins, and so on. I'm sure you'll find something there. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. Hello. यस सर, आपको क्वेश्चन है? वो जो पर आपने 3 पे मार्क किया उसका टाउन नहीं होना चाहिए था आंसर, जहाँ आपने कॉलेज लिखा है। And answer question. जी सर, कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं? जो आपने 3rd पे कॉलेज लिखा है, यहाँ पे टाउन नहीं होना चाहिए था। टाउन में कॉलेज है तो वो प्लेस है एक। अच्छा, चलिए कंफर्म हो जाएगा जब हम सबमिट करेंगे। जी, अभी बाकी बाद में कुछ रिव्यू कर लेंगे क्योंकि आज हमने कंप्लीट मॉक टेस्ट करना है, इसलिए टाइम हमारे पास कम है। ओके ओके। 7 to 10. So, what's a typical lesson like with Gary? Well, he always starts by getting us to tune our guitars. That takes about 5 minutes. Uh-huh. Some people have an app they use, but others do it by ear. Gary goes round and helps them. And while he's doing that, he tells us what he's going to do during the lesson. Right. First, we usually spend about 10 minutes doing some strumming. So, is that using... Oh, what are they called? Plectrums? No, we just use our thumbs. Oh, much easier. Gary reminds us where to put our fingers for each chord, and then we play them together. Sometimes we all just start laughing because we're so bad at keeping time. So Gary starts clapping to help us. Do you learn to play any songs? Yes, we do at least one song with words and chords. I mean, that's harder than you think. Oh, I'm sure it is. That part of the lesson takes about 15 minutes. He often brings a recording of the song and plays it to us first. Then he hands out the song, and if there's a new chord in it, we practice that before we play it together, but really slowly. Do you do any finger picking? That's the last 10 minutes of the lesson, when we pick out the individual notes from a tune he's made up. It's always quite simple. That must be hard, though. It is. But people like it because they can really concentrate. And if we're all playing well, it sounds quite impressive. The only trouble is that he sometimes gets us to play one at a time. You know, alone. Oh, that's scary. It is. But I've got used to it now. At the end, he spends about 5 minutes telling us what to practice for the following week. Well, thanks, Coleman. I'll go and have a look at that website, I think.
That is the end of part 1. You now have 1 minute to check your answers to part 1. सर जुबैर आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। ओके मिस काइंडली जो है वो स्टॉप करिएगा अपनी स्क्रीन। ओके आंसर हम बाद में रिव्यू करेंगे सर। जी सर, आंसर कंप्लीट मॉक करने के बाद रिव्यू करेंगे। ओके ओके। हमें आंसर क्या चैट में लिखने हैं? जी सर, आप चैट में लिख सकते हैं। Part 2. काइंडली कंफर्म करिएगा आपको आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके जी You will hear a man called David talking on the जी सर आदिल आप कुछ कह रहे हैं? नो सर आप कंटिन्यू। radio about his work as a lifeboat volunteer. First, you have some time to look at questions 11 to 16. Now listen carefully and answer questions 11 to 16. I never really planned to be a lifeboat volunteer when I came to live in North Sea. I'd been working in London as a website designer, but although that was interesting, I didn't like city life. I'd been really keen on boats as a teenager, and I thought if I went to live by the sea, I might be able to pursue that interest a bit more in my free time. Then I found that the Lifeboat Institution was looking for volunteers, so I decided to apply. The Lifeboat Institution building here in North Sea is hard to miss. It's one of the largest in the country. It was built 15 years ago, with funds provided by a generous member of the public who'd lived here all her life. As the Lifeboat Institution is a charity that relies on that kind of donation, rather than funding provided by the government, that was a huge help to us. When I applied, I had to have a health assessment. The doctors were particularly interested in my vision. I used to be short-sighted, so I'd had to wear glasses, but I'd had laser eye surgery 2 years earlier, so that was okay. They gave me tests for colour blindness, and they thought I might have a problem there, but it turned out I was okay. When the Coast Guard gets an alert, all the volunteers are contacted and rushed to the lifeboat station. Our target's to get there in 5 minutes. Then we try to get the boat off the dock and out to sea in another 6 to 8 minutes. Our team's proud that we usually achieve that. The average time across the country's 8.5 minutes. I've recently qualified as what's called a helmsman, which means I have the ultimate responsibility for the lifeboat. I have to check that the equipment we use is in working order. The crew have special life jackets that can support up to 4 people in the water, and it's ultimately my decision whether it's safe to launch the boat. But it's very rare not to launch it, even in the worst weather. As well as going out on the lifeboat, my work involves other things too. A lot of people underestimate how quickly conditions can change at sea,
So I speak to youth groups and sailing clubs in the area about the sorts of problems that sailors and swimmers can have if the weather suddenly gets bad. We also have a lot of volunteers who organise activities to raise money for us, and we couldn't manage without them. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 17 to 20. Now listen and answer questions 17 to 20. The training we get is a continuous process, focusing on technical competence and safe handling techniques. And it's given me the confidence to deal with extreme situations without panicking. I was glad I'd done a first aid course before I started, as that's a big help with the casualty care activities we do. We've done a lot on how to deal with ropes and tie knots. That's an essential skill. After a year, I did a 1-week residential course, led by specialists. They had a wave tank where they could create extreme weather conditions, so we could get experience of what to do if the boat turned over in a storm at night, for example. Since I started, I've had to deal with a range of emergency situations, but the work's hugely motivating. It's not just about saving lives. I've learned a lot about the technology involved. My background in IT's been useful here, and I can use my expertise to help other volunteers. They're a great group. We're like a family, really, which helps when you're dragging yourself out of bed on a cold, stormy night. But actually, it's the colder months that can be the most rewarding time. That's when the incidents tend to be more serious, and you realise that you can make a huge difference to the outcome. So, if any of you listeners are interested, why don't you give us a call? That is the end of part 2. You now have 30 seconds to check your answers to part 2. Part 3. You will hear 2 students called Bella and Don discussing a presentation they plan to do on recycling footwear. First, you have some time to look at questions 21 to 24. Now listen carefully and answer questions 21 to 24. Hi, Don. Did you get the copy of the article on recycling footwear that I emailed you? Yeah, it's here. I've had a look at it. So, do you think it's a good topic for our presentation? Well, before I started reading it, I thought recycling footwear. Well, although it's quite interesting, perhaps there isn't enough to say about it, because we put shoes in recycling bins. They go to charity shops, and that's about it. But there's much more to it than that. I realise that now, and I'm keen to research the topic more. That's great. One of the things I didn't realise until I read the article was just how many pairs of trainers get recycled. Well, a lot of young people wear them all the time now. They've become more popular than ordinary shoes. I know. I guess they are very hard-wearing. But don't they look a bit casual for school uniform? I don't think they're right for that. Actually, I think some of them look quite smart on pupils. Better than a scruffy old pair of shoes. So, do you keep shoes a long time? Yes, though I do tend to wear my old pairs for doing dirty jobs like cleaning my bike. I must admit,
I've recycled some perfectly good shoes that haven't gone out of fashion and still fit, just because they don't look great on me anymore. That's awful, isn't it? I think it's common because there's so much choice. The article did say that recent sales of footwear have increased enormously. That didn't surprise me. No, but then it said that the amount of recycled footwear has fallen. It's 6% now, compared to a previous level of 11%. That doesn't seem to make sense. That's because not everything goes through the recycling process. Some footwear just isn't good enough to resell for one reason or another and gets rejected. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 25 to 30. Now listen and answer questions 25 to 30. So, let's find some examples in the article of footwear that was rejected for recycling. Okay. I think there are some in the interview with the recycling manager. Yeah, here it is. Let's start with the ladies' high-heeled shoes. What did he say about those? He said they were probably expensive. The material was suede and they were beige in colour. It looked like someone had only worn them once, but in a very wet field, so the heels were too stained with mud and grass to resell them. Okay. And the leather ankle boots. What was wrong with them? Apparently, the heels were worn, but that wasn't the problem. One of the shoes was a much lighter shade than the other one. It had obviously been left in the sun. I suppose even second-hand shoes should look the same. Sure. Then there were the red baby shoes. Oh, yes. We're told to tie shoes together when we put them in a recycling bin, but people often don't bother. You'd think it would have been easy to find the other, but it wasn't. That was a shame because they were obviously new. The trainers were interesting. He said they looked like they'd been worn by a marathon runner. Yeah. Weren't they split? Not exactly. One of the soles was so worn under the foot that you could put your finger through it. Well, we could certainly use some of those examples in our presentation to explain why 90% of shoes that people take to recycling centres or bins get thrown into landfill. What did you think about the project his team set up to avoid this by making new shoes out of the good parts of old shoes? It sounded like a good idea. They get so many shoes, they should be able to match parts. I wasn't surprised that it failed, though. I mean, who wants to buy second-hand shoes, really? Think of all the germs you could catch. Well, people didn't refuse them for that reason, did they? It was because the pairs of shoes weren't identical. They still managed to ship them overseas, though. That's another area we need to discuss. You know, I used to consider this topic just from my own perspective, by thinking about my own recycling behaviour without looking at the bigger picture. So much happens once shoes leave the recycling area. It's not as simple as you first think, and we can show that by taking a very different approach to it. Absolutely. So let's discuss how we're going to split up the present. That is the end of part 3. You now have 30 seconds to check your answers to part 3. जी मिस सोनिया, आप स्क्रीन शेयर करके पार्ट 4 जो है वो करवा दें। Okay, sir. Let me share my screen.
Part 4. You will hear a zoology student giving a presentation about an animal called a tardigrade. Part 4. You will hear a zoology student giving a presentation about an animal called a tardigrade. वॉइस आ रही है आप लोगों को? नहीं मिस, स्टॉप हो गई है। इसकी ऑडियो आप साइड से और बढ़ा सकते हैं। मैम इसको Part 4. दोबारा से आप शेयर करें तो Here is आई थिंक मे बी नेटवर्क का इशू हो या यस सर। zoology student giving a present. Part 4. You will hear a zoology student. Part 4. You will hear a zoology student giving a presentation about an animal called a tardigrade. First, you have some time to look at question. काइंडली कंफर्म कीजिएगा आवाज आ रही है? जी मिस आ रही है आवाज। 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. For my project on invertebrates, I chose to study tardigrades. These are microscopic, or to be more precise, near microscopic animals. There are well over 1,000 known species of these tiny animals, which belong to the phylum Tardigrada. Most tardigrades range in length from 0.05 to 1 millimeter, though the largest species can grow to be 1.2 millimeters in length.
They're also sometimes called water bears. Water because that's where they thrive best, and bear because of the way they move. Moss piglet is another name for tardigrades because of the way they look when viewed from the front. They were first discovered in Germany in 1773 by Johann Goetze, who coined the name tardigrade. As I say, there are many different species of tardigrade. Too many to describe here, but generally speaking, the different species share similar physical traits. They have a body which is short and also rounded, a bit like a barrel, and the body comprises 4 segments. Each segment has a pair of legs, at the end of which are between 4 and 8 sharp claws. I should also say that some species don't have any claws. What they have are discs, and these work by means of suction. They enable the tardigrade to cling on to surfaces or to grip its prey. Within the body, there are no lungs or any organs for breathing at all. Instead, oxygen and also blood are transported in a fluid that fills the cavity of the body. As far as the tardigrade's head is concerned, the best way I can describe this is that it looks rather strange, a bit squashed even. Though many of the websites I looked at described its appearance as cute, which isn't exactly very scientific. The tardigrade's mouth is a kind of tube that can open outwards to reveal teeth-like structures known as stylets. These are sharp enough to pierce plant or animal cells. So, where are tardigrades found? Well, they live in every part of the world, in a variety of habitats, most commonly on the bed of a lake, or on many kinds of plants, or in very wet environments. There's been some interesting research which has found that tardigrades are capable of surviving radiation and very high pressure, and they're also able to withstand temperatures as cold as -200 degrees centigrade, or highs of more than 148 degrees centigrade, which is incredibly hot. It has been said that tardigrades could survive long after human beings have been wiped out, even in the event of an asteroid hitting the Earth. If conditions become too extreme and tardigrades are at risk of drying out, they enter a state called cryptobiosis. They curl into a ball called a tun, that's T-U-N, by retracting their head and legs, and their metabolism drops to less than 1% of normal levels. They can remain like this until they're reintroduced to water, when they will come back to life in a matter of a few hours. While in a state of cryptobiosis, tardigrades produce a protein that protects their DNA. In 2016, scientists revived 2 tardigrades that had been tuns for more than 30 years. There was a report that, in 1948, a 120-year-old tun was revived, but this experiment has never been repeated. There are currently several tests taking place in space to determine how long tardigrades might be able to survive there. I believe the record so far is 10 days. So, moving on. In terms of their diet, tardigrades consume liquids in order to survive. Although they have teeth, they don't use these for chewing. They suck the juices from moss or extract fluid from seaweed. But some species prey on other tardigrades, from other species or within their own. I suppose this isn't surprising, given that tardigrades are mainly comprised of liquid and are coated with a type of gel. Finally, I'd like to mention the conservation status of tardigrades. It is estimated that they have been in existence for approximately 500 million years, and in that time, they have survived 5 mass extinctions. So it will probably come as no surprise to you that tardigrades have not been evaluated by the International Union for Conservation of Nature and are not on any endangered list.
Some researchers have described them as thriving. Does anyone have any questions they'd like to ask? That is the end of part 4. You now have 1 minute to check your answers to part 4. सर हम इसको सबमिट करवा दें? जी मिस। ओके 39 हमारा रॉन्ग हुआ है। ओके इसका सी वुड आना था तो मैंने फ्लूइड्स लिख दिया। सर जुबैर आप भी अपने आंसर रिव्यू करवा सकते हैं। जी मिस। आई होप सब अपने टैली कर लिए होंगे अपने आंसर्स। अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी फील फ्री टू आस्क, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी पार्ट में डिफिकल्टी आई है तो हम यहाँ पर हमारे ट्रेनर्स जो है वो मौजूद है आपको गाइड करने के लिए। वो आप हमें जैसे हम लोग सजेशन भी दे सकते हैं हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हमारी जो है वो कमी है इस सेशन में, कहाँ पे हमें इम्प्रूव करना चाहिए। वो मैं पूछ रहा था कि जैसे हम लोग आंसर्स टाइप करते हैं ना, तो उसमें कभी ऐसा हो जाता है कि टाइपिंग एरर हो जाता है या फिर स्पेलिंग हम लोग गलत लिख देते हैं, तो उसमें ऑटो करेक्ट का कुछ होता है, कुछ नो सर, स्पेलिंग मिस्टेक है? नहीं। वो उनकी वेबसाइट की तरफ से उन्होंने वो ऑप्शन जो है ना वो ब्लॉक किया होता है ना, तो हम उसको स्पेलिंग मिस्टेक डिटेक्ट नहीं करता वो। अगर वो स्पेलिंग मिस्टेक डिटेक्ट करे तो फिर हमारे बैंड जो वो अच्छे ना आ जाए। अब ये
ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, मैं कभी स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ। आप स्पेलिंग पे फिर फोकस करें। जैसे अभी इसमें एक आया था प्रोटीन के नाम से ना, एक ब्लैंक आया था, तो उसमें प्रोटीन की स्पेलिंग आई ई करके लिख दी थी, हालांकि ई आई होती है। तो इस तरह की गलती होती है। और किसी पार्टिसिपेंट को कोई क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो हम, मेरे ख्याल से हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये ऑप्शंस हमने ये वाले चूज़ क्यों किए थे। मतलब लिसनिंग में जो है हमें एग्जैक्टली क्या चीज़ समझ आई जिससे हमने ये चूज़ किया। तो अगर किसी को याद हो तो उसने, मतलब अगर ये चूज़ किया या कोई भी किया तो क्या रीज़न थी, उसको क्या सुनाई दिया था। भाई इससे यह है कि आप आइडिया हो जाएगा ना कि जो है हमें सही समझ आ भी रही है या नहीं, या कौन सी ट्रिक्स हैं या किन कौन से कीवर्ड्स हैं जिनको हमें जो है उस चीज़ पे फोकस रखते हुए हम इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। जी सर। जी तो ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, अगर कोई बताए तो ये अगर आपने चूज़ किया था तो अ, आपको क्या लगा कि जिसके रीज़न में आपको लगा कि ये ऑप्शन ही ठीक होगा। वो एलिमिनेट वाली ट्रिक बताई थी ना कल, वो एलिमिनेट कर करके फिर हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अमूमन ऐसा होता है कि जो ये मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें आपने फौरन से ना, जैसे ही वो 30 सेकंड का आपके पास टाइम होता है ना, उसमें आपने हाईलाइट करने हैं फौरन से कीवर्ड्स क्वेश्चन में जितने भी हैं। और उसके बाद आपने जो है वो एलिमिनेशन वाली टेक्निक जिस तरह आप करें वो अप्लाई करनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होगा कि जो आंसर है वो लास्ट पे बोलता है, ये नॉट ऑलवेज बट मोस्टली केसेस में ये होता है। या वो किसी क्वेश्चन पे अगर कोई एग्री कर जाए किसी ओपिनियन पे तो वो आंसर होता है। तो हमें जो इस तरह के डिस्ट्रैक्टिंग जो वर्ड्स होते हैं, बट ऑल दो, इन माई ओपिनियन, हाउएवर, इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं इन पे हमने खास फोकस रखना होता है, क्योंकि वही ट्विस्टिंग पॉइंट होता है। और शुरू में वो मोस्टली जो है वो रॉन्ग आंसर जो है वन बाय वन उन सब का ही नाम लेता है। पार्ट टू तो एज सच उस हिसाब से इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, क्योंकि इसमें सिर्फ फर्स्ट पर्सन ही होता है और नॉन एकेडमिक टॉक होती है। तो उस चीज़ को फिर भी टैकल किया जा सकता है, लेकिन जो पार्ट थ्री है उसमें जो है वो सारी एकेडमिक टॉक होती है, और यूजली 2 to 3 पर्सन्स के दरमियान होती है, किसी एकेडमिक रिलेटेड या कोई लिटरेचर के रिलेटेड होती है। तो वो उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। और पार्ट वन और फोर में ये डिफरेंस है कि पार्ट वन आपका बहुत सिंपल होता है, तो लेकिन जो पार्ट फोर है ना उसमें हमें यहाँ पे डिफिकल्टी आती है कि बहुत लॉन्ग सेंटेंसेस लिखे होते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि स्पीकर जो है वो कहाँ पे है। तो उसके लिए बेस्ट ट्रिक यही है कि आपने साथ साथ साइन पोस्टिंग करनी है। जैसे ही आप साइन पोस्टिंग करेंगे तो आपको जो है आंसर डिटेक्ट करने में बहुत आसानी होगी। जी सर। अच्छा, इसमें यह है कि जो पहले 3 पार्ट्स होते हैं ना, उसमें यह है कि आपको जो है क्वेश्चंस के दरमियान आपको एक पॉज मिलता है। तो उसमें यह है कि आप जो है वो दूसरे जो क्वेश्चंस हैं फर्दर उनको आप रिव्यू कर सकते हैं, उनको जो है ना, जिस तरह ये देखें फर्स्ट 5 हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे उसने पॉज लिया, इनको रिव्यू करने के लिए आप क्विकली हाईलाइट कर सकते हैं। ये तीनों पार्ट में होता है, लेकिन जो पार्ट 4 है उसमें ये जो है ऑप्शन नहीं होता, उसमें आपने वन गो में पूरे 10 के 10 सॉल्व करने होते हैं। तो उसमें जो है ना वो हेडिंग दी होती है, जैसे ये अभी रीजन लिखा हुआ है, फुटवेयर लिखा हुआ है। तो इसी तरह कुछ क्वेश्चंस के बाद हेडिंग आएंगी, मतलब वो एक आपको एक बताएगा कि जैसे स्पीकर उस चीज़ पर मूव करता है वो एग्जैक्टली वो वर्ड बोलेगा।
तो उससे आपने टैकल करना है कि अब ये वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, क्योंकि इसमें मोस्टली ये होता है कि हम किसी एक क्वेश्चन पे ही स्टिक होते हैं और वेट करते रहते हैं कि मैं इसका आंसर करूं, जबकि उस पार्ट में सबसे डिफ़िकल्टी लेवल ही यही है कि पूरे का पूरे जो वो नोट होता है वो बेसिकली कंप्लीशन नोट के होते हैं क्वेश्चन। तो उसमें सारे का सारा जो वो होता है डॉक्यूमेंट वो पैराफ्रेज होके वो बोलता है, कभी भी कोई रेयरली होगा कोई एक वर्ड वो कोई एग्जैक्ट बोल दे, नहीं तो सारा पैराफ्रेज होता है। तो इस वजह से काफ़ी जो है वो मुश्किल होती है उसको ट्रेस करने में। हाँ, लेकिन जो आंसर होता है जो एग्जैक्ट वो एग्जैक्ट आंसर वर्ड वो ही बोलता है। उसके अलावा जो उसके सराउंडिंग्स में वर्ड्स होते हैं वो सारे पैराफ्रेज्ड होते हैं, जबकि बाकी पार्ट्स जो होते हैं उनमें यह है कि कुछ पैराफ्रेज होते हैं, कुछ वो एग्जैक्टली बोलता है। तो उससे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। अच्छा, एक और ट्रिक जो है वो मैम अरीबा का सेशन मैंने अटेंड किया था आइट्स का, तो उसमें उन्होंने एक बताया था, मुझे तो वो काफ़ी हेल्पफुल लग रही है। उन्होंने ये बताया था कि आप जो उन्होंने आइट्स ऑनलाइन टेस्ट जो वेबसाइट है पहले उस पर कुछ टेस्ट प्रैक्टिस किए थे, तो उनका डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा है। और वो एक्चुअल टेस्ट उस तरह से नहीं होता, वो ये एग्नोवेट या टेस्ट सिमुलेशन के तरह ही होते हैं। तो अगर आप कुछ जो है ना वो प्रैक्टिस वहाँ पे कर लेना तो उससे यह है कि आपका ब्रेन ट्रेन हो जाता है। तो जब आप फिर इस वेबसाइट पे आएंगे ना तो आपको यह है कि उस तरह से इतने ज़्यादा वो आप नर्वसनेस फील नहीं करेंगे। तो आप मुझे ये लिंक काफ़ी टिप। बताएंगे वो जी जी, कैसे? मैं शेयर कर देता हूँ, जी मैं शेयर कर देता हूँ, मुझे क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल लगा, तो इस वजह से मैंने कहा आपसे शेयर कर। इसके अलावा अगर आपको किसी क्वेश्चंस में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन्हीं को नेक्स्ट प्रैक्टिस करें। बल्कि मंडे से तो हमारा रीडिंग मॉड्यूल शुरू हो रहा है, तो आप उसके रेलिवेंट कुछ भी आप पूछ सकते हैं, या स्लैक पे आप जो है वो हमें मैसेज कर सकते हैं। हम जो है कोशिश करेंगे कि उसके रिलेटेड ही जो है वो टॉपिक तैयार करके आपको प्रेजेंट करें। सैटरडे संडे नहीं होता? नहीं सर, सैटरडे संडे ऑफ होता है। उसमें इवनली आपका एक इंटरनेशनल वेबिनार होता है ना, और 2 वीकली होते हैं वर्कशॉप्स होती हैं। अच्छा, तो उसमें क्या होता है सेमिनार और वीकली वर्कशॉप में? क्योंकि मेरे को 2 दिन ही हुए ये स्लैक ज्वाइन किए हुए, मुझे पता जी नहीं है। जी, कोई मसला नहीं सर। सर उसमें यह कि एक इंटरनेशनल जो है वो वेबिनार होता है जिसमें कोई ना कोई इंटरनेशनल पर्सन जो है उसको इनवाइट किया जाता है, और उस जो टॉपिक के रिलेटेड जो है ना उस पर सारी डिस्कशन होती है। यानी वो पूरी प्रेजेंटेशन देते हैं, फिर स्टूडेंट उनसे जो है वो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। जैसे लास्ट वीक का भी एक बहुत ही ज़बरदस्त वेबिनार हुआ था। मैम आसिमा खोखर हैं, फ्रॉम उसका टाइटल था फ्रॉम सियालकोट टू सिलिकॉन वैली। तो वो अगर आप यूट्यूब पे देखें, रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल है। उन्होंने पूरा स्टेप बाय स्टेप पाथ बताया था गूगल में जाने के लिए। तो इसी तरह से कोई ना कोई हर वीक जो है वो इंटरनेशनल मेंटोर से हम जो है ना वो वेबिनार करवाते हैं कंडक्ट, किसी भी टॉपिक पे। और जो वर्कशॉप्स होती हैं उनमें यह है कि इस तरह से होता है मोस्टली कि कोई कोर्सेज होते हैं उनको 2 या 3 आवर्स में जो है वो एक बिगिनर फ्रेंडली के तौर पे जो है वो एक कोर्स प्रेजेंट किया जाता है। जैसे पाइथन हो गया, या मशीन लर्निंग हो गई, या कोई टाइपिंग स्पीड के हवाले से कोई जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर देता है। तो वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और सैटरडे जो है वो 5 PM जो है वो हमारे कैरियर टॉक होता है सेशन, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। वो जो है सब लाजमी अटेंड करते हैं। उसमें जो है मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर जफर शायद खुद ज्वाइन करते हैं और स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं या उनके क्यूरीज जो है उनको रिसॉल्व करते हैं। सही है। थैंक यू सर। वो आप लिंक बता दीजिएगा अभी लिसनिंग का जो आप कह रहे थे, वो मैं उसको देखता हूँ। जी मैं अभी शेयर कर देता हूँ।
अच्छा, आप लोगों में से डेली कितने टेस्ट जो हैं वो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं पार्टिसिपेंट्स में से? सर यहाँ ज्वाइन होने से पहले मैंने जो आइल्स की जो बुक है ना, जी जी। 2015, 14 और 13 में से मैंने की है सॉल्व। बाकी वेबसाइट्स का मुझे पता नहीं था इस पे भी होता है, मैं तो वो बुक्स में से किए थे ऑडियो सुन के। ठीक, लेकिन अभी मोस्टली जो है वो हर जगह पे कंप्यूटर बेस्ड हो गया। तो आप कोशिश करें जो ये वेबसाइट्स हैं इन्हीं से प्रैक्टिस करें, इनका जो सारा पैटर्न है वो एक्चुअल टेस्ट वाला ही है। मैंने मतलब उस स्टाइल में किया था, मतलब मैंने नोटपैड खोला साइड में, वो ऑडियो बैक पे चल रही थी, सवाल थे, तो मैं जो भी आंसर्स थे वो नोटपैड पे लिख रहा था, मतलब उस ही अंदाज में किया था। ओके ओके। और इसके हवाले से जो है वो हेल्पफुल हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं। सर असद यकूब का है आइल्स का। जी वो मैंने उनकी जो देखा है। टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, उन्होंने कुछ पीडीएफ्स भी शेयर की हुई हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल हैं वो। उसके बाद मुझे आइल्स जो आइल्स मुझे लिस्ट का एक चैनल है। मुझे असल प्रॉब्लम सिर्फ स्पीकिंग में हो रही है। स्पीकिंग में, लिसनिंग में अच्छा कर पा रहा हूँ, लिसनिंग और रीडिंग भी एवरेज कर पा रहा हूँ, बस मुझे स्पीकिंग में प्रॉब्लम हो रही है। आज वो 5 बजे एक था सेशन, वो तो उन पे उस पे मैंने दिया था मॉक इंटरव्यू। आज तो खैर उनकी लास्ट क्लास ही थी, 5 PM वाले की, जिस पे वो पढ़ा हम्म। रहे थे, वो अहमद फराज नाम से वो जी पढ़ा सर। रहे थे। तो उनका सेशन लिया था, उसमें मैंने मॉक टेस्ट दिया, तो उन्होंने बोला कि मुझे अगर वो असली इंटरव्यूअर होते तो वो 5 बैंड देते। तो मेरा भी स्पीकिंग अच्छा नहीं है। सर इसमें यह है कि जो स्पीकिंग और राइटिंग है ना, उसका मोस्टली जो है लोगों का बैंड जो है वो मैक्सिमम 7.5 तक ही जा रहा है। क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं इनके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस और मेहनत की ज़रूरत है। अगर हम देखें जो दूसरे पार्ट्स हैं जैसे ये लिसनिंग और रीडिंग है, तो इसी वजह से जो है सबसे ज़्यादा टाइम यानी 80% टाइम जो रूल बताया जाता है आई कोड ग्रुप पे, वो 80% टाइम आपने लिसनिंग और रीडिंग को देना है, और 20% जो टाइम है वो आपने स्पीकिंग और जो है राइटिंग को देना है। क्योंकि आप उसके जितना भी जो है वो आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए आपको कि उसमें उसको मास्टर्स करने के लिए, उसमें 8 बैंड या उस प्लस लेने के लिए। उसमें ये एक है ना कंसर्न कि हमारा उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं है, हम यूजुअली प्रैक्टिस नहीं करते बोलने की, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो लेकिन जो हम लिसनिंग और रीडिंग है इनको हम ये जो स्ट्रेटजीज हैं टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इनको अडॉप्ट करते हुए हम इसको 9/9 ले सकते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वो इधर कवर हो जाती हैं। अगर जी स्पीकिंग या राइटिंग में आपका बैंड कम भी आ रहा है तो इससे यह है कि परेशान नहीं होना आपने। आप फोकस रखें कि ये जो पहले दो पार्ट हैं इनमें आप 9/9 लें। इससे यह है कि आपका जो बैंड है वो वहाँ से जो ड्रॉप होगा वो कवर अप हो जाएगा। जी, एवरेज एवरेज मेंटेन हो जाएगा मतलब। जी जी। ठीक है। सर आपने जो ये लिंक भेजा है, ये तो आप अभी करा रहे थे, वो वाला जो हार्ड वाला लिंक है जिसमें हार्ड MCQs होते हैं, वो वाला दीजिए, वो जो आप ओके कह ओके, रहे थे टीचर में, जो टीचर कह मैं रहे शेयर करता थे। आइल्स ऑनलाइन, तो बुक मार्क कर देता हूँ। हूँ। ओके पार्टिसिपेंट्स, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम मीटिंग को यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। स्कूल में सर अस्सलाम ओके। वालेकुम। आई एम ऑडिबल। जी जी। सर वालेकुम मैंने अस्सलाम। अगर हमने 8 बैंड लेना ओवरऑल तो हमारा क्या होना चाहिए स्ट्रेटजी के कितने कितने बैंड हो हार्ड बटन में। सर इसमें यह कि आइल्स एडवांटेज जो है उस वेबसाइट है उसमें बैंड कैलकुलेटर अगर आप सर्च करें तो वहाँ पे आप जो है कर सकते हैं कि अपने बैंड जो है दे के आप देख सकते हैं कि लिसनिंग में लेकिन जो मैंने देखा है वो लिसनिंग और रीडिंग जो है अगर इनमें आप 9/9 ले लें और बाकियों में अगर आप दोनों में जो है राइटिंग और स्पीकिंग में 6.5 भी आप ले रहे हैं एवरेज,
तो ये आपका 8 बन जाता है। तो तभी जो है ज़्यादा फोकस जो है वो ये रीडिंग और लिसनिंग पे जो है वो करवाया जा रहा है iCode गुरु पे, ताकि इसको आप मास्टर करें और 9 आउट ऑफ 9 लें। मैं वो ठीक है सर। वेबसाइट भी शेयर कर देता हूँ, जिससे आप जो है वो अपना बैंड कैलकुलेट कर सकते हैं। सर जफर कहते हैं कि स्पीकिंग में 7 बैंड होना चाहिए कम से कम। सॉरी। सर जफर कहते हैं कि आपके स्पीकिंग में 7 बैंड होना चाहिए कम से कम, क्योंकि आपने अगर आपने वहाँ जाके टी है या आर ए करनी है तो फिर। जी बिल्कुल, अगर आपका जितना ज़्यादा अच्छा होगा बैंड वो तो उतना प्लस पॉइंट है। लेकिन यह है कि उसके लिए फिर प्रैक्टिस चाहिए और टाइम आपको देना पड़ेगा। अब जैसे कि कुछ लोग हैं वो 1 वीक या 2 वीक, आफ्टर 2 वीक जो है वो उस चीज़ को टेस्ट को बुक कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो है प्रैक्टिस मांगती हैं, कोई तकरीबन 2 मंथ तो चाहिए एटलीस्ट आइल्स के लिए प्रॉपर। और इसके साथ कोई और अगर हम एक्टिविटी ना करें तो ही बेटर जो है वो तैयारी होती है। अदरवाइज तो जो है वो फोकस आउट हो जाता है। हाँ, अगर आप इतना टाइम दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप 7.5 तक भी जा सकते हैं स्पीकिंग में। ये सारा ठीक है सर। प्रैक्टिस पे ही मैटर कर रहा है। ठीक है सर। अच्छा, ये मैंने एक वेबसाइट का लिंक शेयर किया है, आइल्स एडवांटेज का। ये काफ़ी हेल्पफुल है वेबसाइट। इसमें काफ़ी जो है वो ट्रिक्स बताई गई हैं। और ये आप इन चीज़ों को भी गो थ्रू कर सकते हैं। इसमें आर्टिकल्स जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हैं। जी सर, ये इस नाम का एक यूट्यूब चैनल भी है, उसमें राइटिंग की टिप्स बड़ी अच्छी बताई हैं। जी सर आदिल, बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी जो अगर आप एक वन गो में एक क्लिप है लिसनिंग की, अगर आप वो देखें तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है। उसमें जो ट्रिक्स बताई गई हैं वो एक्चुअली वर्क करती हैं। जी सर। जी, पार्टिसिपेंट्स में अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।